So good morning, everyone. So today we will do the last topic of this complex module. Is some one type of problem is remaining here. Uh, in that, actually, we require some of the concepts of derivative which you have done in 11th or 12th. Okay. So do you remember how did we write the derivative definition? एक definition था derivative का कि f dash of x is said to be derivative if there was a condition. So that condition, I don't know how many of you remember, but actually I'll give those conditions. When y is a function of x, in real numbers, what do we have? Y is function of only one variable. X is an independent variable, y is a variable depending on x. And then we had a definition which you have done in 12. जहाँ पे हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, वो डेरिवेटिव वाले पार्ट में एक डेफिनेशन था कि f of x is said to be differentiable at x is equal to c if f dash of c is equal to limit x tending to c. We have to make use of these definitions in today's topic. Okay, so this is the definition which you have done in 11th or 12th before starting this derivative chapter. Yes, that is also there. Yes, that is by using the, yes, that is first principle. Yes, you are right. Yes. This is a basic definition of f of x. F of x is said to be differentiable at x is equal to c if f dash of c. This is one definition. And then we had, using the first principle, limit h tending to 0, if it is x here, then you will get x plus h minus f of x by h. Or I can say in general, f dash of x can be written as limit h tending to 0, f of x plus h minus f of x by h. Now this is when y is a function of x. There is only one variable. So remember this concept here. There is only one variable here. Okay. Y is a function of x. So x is the only independent variable. तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? Y को हम x से differentiate कर रहे हैं. जब x से differentiate करेंगे तो there is a change in the x variable. x plus h और यहाँ पे x लिखते हैं. So remember this concept. जो वेरिएबल से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे x plus h minus f of x. This what we have done was in the real variables. Now in the case of complex also same definition we have. Now यहाँ पे एक change क्या था? I don't know how many of you remember. ये भी था कि the left hand derivative should be equal to the right hand derivative. Then only the function is said to be differentiable. मतलब x can approach c through the negative x-axis or positive x-axis, x tending to c plus, x tending to c minus. We had that left hand derivative should be equal to the right hand derivative. Okay, लेकिन वहां पे real axis ही था. There was only one variable x. Okay, but when you write in complex, z tending to z naught, मतलब z is a function of x and y. So you will not have, that is along the x-axis or along y-axis, you will have along any curve. So कोई भी curve से z approaches z naught, this limit has to be a unique limit, then only f dash of z exists. याद रखना है. Z tends to z naught along any curve. In real हमारे पास खाली एक ही axis था, real axis. But when you have z can tend to z naught along any axis. Okay? कोई भी curve से अगर z tends to z naught, मतलब z can move from z to z naught along any curve. Okay, the value of this limit has to be the same. It should be independent of the path. That is why we have this condition. The limit exists and is independent of the path along which z tends to z naught. So remember this part. Z naught means f dash is a function, f dash of z is differentiable at z naught. जैसे यहाँ पे c है वैसे यहाँ पे z naught. Okay, z naught is the point at which the function is differentiable. Okay, तो ये हमको याद रखना है कि it is independent of the path along which z tends to z naught. This is very important. तो हम लोग ये दो concept हमको use करना है. And then similarly we have first principle here also in the case. Same condition that delta z has to tend to 0 along any path, but the value of this has to be unique. Or we should get this single value for f dash of z as delta z tends to 0.
तो हमें ये एक डेफिनेशन याद रखना है और ये एक डेफिनेशन. Remember these two definitions for proving problems of today's. A special type of problems are there. What we are going to do it today. तो ठीक है, पहला ये याद रखो, इन द रियल में जैसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल किया था वो वाला डेफिनेशन, एंड देन दिस डेफिनेशन. Both these definitions are enough to do today's problem. ठीक है, so just make a note of this formula and this formula. The remaining we are not requiring it. तो ये सेम ही है दोनों का. तो rewrite this formula and this formula. This is very important. आज थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है. टिल नाउ व्हाट वी हैव डन ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं है आज जो करना है. Pay attention carefully because थोड़ा सा difficult है. Difficult in the sense. Okay. Now prove that f of z equal to some function for z not equal to 0 is f of 0 equal to 0 is not analytic although CR equations are satisfied at z equal to 0. So these are a typical type of problems where एक तो ये है कि function is defined in two intervals. अभी तक हमने जितने भी problems किए function was defined as one only, f of z equal to something. है ना, we were not defined that f of z equal to this for z not equal to 0 equal to 0. एक तो function दो में define नहीं था. That is a change here. And you have to show that CR equations are satisfied only at one particular point. But the function is not differentiable. Analytic matlab differentiable. You have to show that CR equations are satisfied at z equal to 0, but the function is not differentiable at z equal to 0. Okay, there are some problems based on this concept. तो पहला क्या है कि f of z will be defined in two intervals. ताकि हम यूज कर, ये जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, this is mainly for the function when it is defined in two intervals. अभी तक हमने जितने भी किए हैं वो सब सिंगल फंक्शन था. f of z equal to some function, maybe cos hyperbolic e raised to या जो भी था, एक सिंगल फंक्शन था. यहाँ पे दो इंटरवल्स में फंक्शन डिफाइंड है, for z not equal to 0 and z equal to 0. ठीक है, तो अगर z not equal to 0 है तो यहां से हमें u और v निकालना है, और अगर z equal to 0 है तो u equal to 0, v equal to 0 है. Okay, so now f of z we know it is equal to u plus iv. तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? राइट दैट फंक्शन. तो अभी हम जो भी निकाल रहे हैं for z not equal to 0 निकाल रहे हैं. f of z equal to this function. तो I have opened the bracket and simplified. तो ix square plus ix square minus y square plus iy square upon x plus y. फिर मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया है. रियल पार्ट x square minus y square and imaginary part is x square plus y square. ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ तक हो गया. This we are calculating for z not equal to 0 हम लोग. Now what is u and v from here? We will get u is x square minus y square upon x plus y and v will be equal to x square. The real part is x square minus y square upon x plus y and the imaginary part is x square plus y square upon x plus y. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? CR equation. And normally CR equations, now the function is given in x and y, not in the polar form. x and y में दिया है, मतलब हम लोग को ux uy vx vy निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे ना, ux uy, क्योंकि हमें ये दोनों यूज करना है. We have to make use of these two functions to calculate ux uy. इसीलिए we will make use of the first principle method. We cannot do it directly ux uy because यहाँ पे दो functions, दो intervals में function defined है. Okay, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, u is equal to this, v equal to z, x square plus y square upon x plus y. तो पहले ये वाला पार्ट ले लो. हमें जो पहला फंक्शन दिया है उसका हमने u and v निकाल दिया है. ठीक है, नाउ हमें CR इक्वेशंस निकालना है. So we know the CR equations, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. वो करना है हमको. उसके पहले these are the u and v we have got in the previous step. Okay, so I showed you now when y is equal to function of x, f dash of x can be written in this form. ठीक है, y is a function of x. Now here u and v are functions of x and y. Okay, this was the first principle which was defined when y is a function of only one variable. Now here we are having u and v are functions of two variables, x and y.
तो हमें क्या कैसे लिखना है देखना है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हमें लिखना है डो u बाय डो x, ओके, डो u बाय डो x। ना मैंने क्या बोला था, अगर हम y को x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के वेरिएबल में चेंज होता है, यहाँ पे x प्लस h और यहाँ पे x हो जाता है। वैसे ही जब हम u को x से डिफरेंशिएट करेंगे, इवन दो u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, y विल रिमेन एज अ कांस्टेंट, खाली x के बदले x प्लस h पुट करना है और ये वाला x वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, so same definition, it is extended to the partial derivative. This was the definition using the real number when y is a function of single variable. Now this is extended to the partial derivative when u is a function of two variable, and when we are differentiating u partially with respect to x, y remains as a constant. तो y को हमें वैसे का वैसे ही लिखना है और x के बदले x plus h और यहाँ पे x हो जाएगा। ओके ओके, अभी हमें कहाँ पे निकालना है, पार्श दिस CR इक्वेशंस एट z इक्वल टू 0 में निकालना है हमको। सो z इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। सो नाउ व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हाट विल हैपन टू दिस फंक्शन? सो वी विल गेट लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब x 0 है तो ये h हो जाएगा, ये 0 और ये 0 और ये 0 डिवाइडेड बाय h। ओके, so what we are doing is using the first principle method for the partial derivative dou u by dou x. Y is a constant when you differentiate with respect to x, तो खाली x के बदले x plus h और x लिखना है यहाँ पे। Okay, so when x is 0, y is 0, we will get limit h tending to 0, u of h comma 0. Why x equal to 0? Because we have to show the CR equations at z equal to 0. Okay, अभी हमें ये function use करना है, u of h comma 0. Okay, u of, now this is not 0 0 है ना, तो u of h comma 0 मतलब वो वाला u यूज करना है जहां पे z not equal to 0 था, मतलब ये वाला u। तो यहाँ पे हमें x को h पुट करना है, y को 0 पुट करना है, तो what will happen to u function then? अगर ये पूरे फंक्शन में मैंने x को h पुट किया, y को 0 पुट किया, तो what will remain in u function? क्या बचेगा u में? अगर x को h और y को h बचेगा, यस। और ये फंक्शन कब है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मतलब हमारा सेकेंड फंक्शन f ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। f ऑफ 0 इक्वल टू 0 जो दिया था इनिशियल प्रॉब्लम में, वहां से हमें पता है कि when x and y are 0, u इक्वल टू 0, तो ये वाला हो जाएगा लिमिट h, इसकी वैल्यू h आ गई, and when x and y are 0 in the given function, u was equal to 0, and this upon h, so we have got ux is equal to 1. We are making use of both the u's. This is the u when z is not equal to 0, and this is the u when z is equal to 0. We are making use of both the u's in calculating the ux. That is why we make use of this first principle method. ठीक है? And this x equal to 0, y equal to 0 is to show the CR equations at z equal to 0. Don't confuse here. Okay, this is to show the CR equations at z equal to 0, and यहाँ पे ux जो है, this u is taken from the first interval and this u is taken from the second interval. We have to make use of both the u's. So we get ux is equal to 1. Okay. In a similar way, अगर मुझे dou u by dou y लिखना है, अगर मुझे dou u by dou y लिखना है, तो मतलब क्या होगा उसमें? x को कांस्टेंट रखना है, y को वेरिएबल y को चेंज करना है। तो व्हेन आई राइट dou u by dou y, यहाँ पे x सेम रहेगा, y के बदले y plus h और y आ जाएगा। ठीक है, वी आर डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x इज अ कांस्टेंट, तो x वैसे का वैसे ही रहेगा, y के बदले y plus h और y हो जाएगा। This is from the first principle. Okay, now again at the point z equal to 0 or at x equal to 0, y equal to 0, this will reduce to limit h tending to 0, u of 0, y is 0 means h, again 0 0 upon h. फिर से ये वाला जो u है वो हमें फर्स्ट इंटरवल से लेना है जहां पे z नॉट इक्वल टू 0 दिया है, और ये वाला जो u है हमें सेकेंड इंटरवल में जहां पे f of 0 equal to 0 दिया हुआ है। तो now again what will happen to u when x is 0, y is h?
यहाँ पे हमें x को 0 पुट करना है, y को h पुट करना है, तो क्या हो जाएगा y u of 0 comma h. What will be the value of u of 0 comma h? Yes, correct, minus h. Very good. Yes. तो पहला वाला minus h हो जाएगा. And what is the value of u of 0 comma 0? It is already equal to 0. तो next step में हो जाएगा minus h minus 0 upon h, that is equal to minus 1. तो uy की वैल्यू हो गई minus 1. ऐसे ही हमें vx और vy निकालना है. ठीक है, सेम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हमें, तो why we are applying this first principle? Because the function is defined in two intervals. That is the main reason for that. Now vx, vx का मतलब क्या होता है? फंक्शन v लेना है और x से डिफरेंशिएट करना है, तो y will remain as a constant. The change in the variable will be in x only. तो x plus h और x लिखना है यहाँ पे. So tell me what will be vx at the point z equal to 0? क्या होगा उसका वैल्यू? फिर से हमें पुट करना है x को 0, y को 0. When I put x equal to 0, y equal to 0, we will get 0 v of h comma 0 minus v of 0 comma 0 upon h. अभी हमको v का फंक्शन लेना है when z is not equal to 0. So when z is not equal to 0, v is defined in this manner. Again put x is equal to h and y equal to 0. We have to see what is the value of v of h comma 0. तो क्या आएगा? v of h comma 0 will become h here, h square plus 0 upon h plus 0, that is equal to h. तो ये h हो जाएगा, and this v is calculated from the function when f of 0 equal to 0. तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा upon h, that is equal to 1. Sorry. Okay. In a similar way, dou v by dou y. It is better than using those u by v method also. एक बार ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो इजीली हो जाता है यहाँ पे. But this is calculated at a particular point. That is the main thing. Similarly, vy निकालना है. क्या होगा vy का वैल्यू? जस्ट टेल मी. vy में क्या करना है? x तो कांस्टेंट रहेगा, y इज द वेरिएबल, तो यहाँ y प्लस h लिखना है, यहाँ पे y लिखना है. So at x equal to 0, y equal to 0. Okay, this y we are using because we have to show that the CR equations are satisfied at z equal to 0. z equal to 0 का मतलब होता है x equal to 0, y equal to 0. So what is dou v by dou y और vy? vy की वैल्यू क्या होगी? जब v में हम x को 0 पुट करेंगे, y को h पुट करेंगे. Yes. Okay, Tejas, 1, yes. Other answers? 1 है कि -1 है? vy. One है. Right, Tejas, all of you are right. Tejas, Harsh, Uttar, all of you are right. Why? Because यहाँ पे माइनस साइन आता ही नहीं है ना v में. अगर मैंने x को 0 पुट किया, यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है? बिकॉज माइनस वाई स्क्वायर था, इसके लिए -1 आया. तो vy की वैल्यू हो जाएगी 1. ओके, तो हमारे क्या क्या कॉन्स्टेंट्स आ गए? ux था, uy वी गॉट, vx वी गॉट, vy वी गॉट. सो राइट ऑल दोस. क्या क्या हमको मिला है? ux क्या था हमारा? ux was 1, uy is -1, vx is 1 and vy is 1. See whether CR equations are satisfied at x equal to 0, y equal to 0. Is it true? ux की वैल्यू 1 थी, uy यहाँ पे -1 आया है, vx is 1, vy is also 1. So we have ux is 1 and uy is 1. So ux is equal to vy and uy is equal to -vx. The CR equations are satisfied. Okay, this we have to calculate at a particular point, not at all the points. Yes, it is satisfied. Correct. ux is equal to vy and uy is equal to -vx. So CR equations are satisfied at z equal to 0 only. Okay, not at all the points, but it is satisfied at z equal to. वही हमको पूछा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग उतना ही ट्राई कर रहे हैं. बट हमको और एक क्या प्रूव करना है? Function is not analytic. मतलब f dash of z does not exist. हमको प्रूव करना है.
Okay, function is not analytic means function is not differentiable. Not differentiable का meaning है कि the f dash of z does not exist. तो हम लोग फिर से यूज करेंगे वो definition. I gave you in the beginning only. F dash of z naught is equal to limit z tending to z naught f of. This is the definition to show to prove that f of the function f of z is differentiable at z naught. Okay, this is the definition to prove that the function f of z is differentiable at z naught. हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? फंक्शन f of z is differentiable at z equal to 0. तो यहाँ पे हमको निकालना है f dash of 0. ओके, f dash of 0 हमको निकालना है यहाँ पे. ओके, now we are given both the functions. f of z दिया है जब z not equal to 0. And when f of 0 is also given in the problem, substitute everything here. Z also we know it is equal to x plus iy. Substitute everything from the given problem. Z is x plus iy. F of z दिया था जो given function था when z is not equal to 0. And when z equal to 0, f of 0 दिया हुआ था. तो जो भी functions दिए थे problem में वो यहाँ पे substitute करना है. तो what we will get? ये function दिया हुआ था f of z. When z is not equal to 0, f of 0 0 दिया था and z के बदले x plus i. Okay? Maybe we can simplify further, bring this x plus y to the denominator. Okay? Now हमें क्या prove करना है? f dash of 0 does not exist. Okay? तो हमें क्या प्रूव करना है कि दिस लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है. As z approaches 0 along any path, if the value is different for different paths or different curves, then f dash of 0 does not exist. ठीक है, तो हम क्या करते हैं पता है? यहाँ पे one simple example we try. हमें क्या प्रूव करना है कि z, क्योंकि यहाँ पे z है, it is not left or right derivative. Here we have z. Z is a function of x and y. So you can have any curve. You can try any curve and show that and calculate the value of this limit. अगर दो अलग अलग कर्व्स लेके हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू अलग है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सिंपल एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे? y को mx ले लेंगे. y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और m की वैल्यू चेंज होती रहेगी. ओके, तो सिंपल एग्जांपल व्हाट वी विल ट्राई इज z टेंड्स टू 0 अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू mx. तो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करने के बाद आई विल राइट y इज इक्वल टू mx. इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया है एंड देन y इज इक्वल टू mx. मतलब पूरे y फंक्शन को हम x में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. So z also will tend to x now. Z will become x now. So in the next step, putting y is equal to mx. हम कोई भी कर्व ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि y is equal to mx ही लेना है. तुम पैराबोला ले लो, कोई भी कर्व you can take. Y square equal to x or y cube is any curve you can take. Okay, and you can show that the values are different. Any curve you can take, that is not an issue. मैं यहाँ पे y is equal to mx. Why we are taking is because if the whole function, अगर x square सब जगह कैंसिल हो, खाली अगर m बचेगा तो as m value will change, the value of f dash of 0 also will change. वो इसके लिए हमने एक ही कर्व दिया है और यहाँ पे m can take different values here. y is equal to mx. तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया तो everywhere we will have x square now. अगर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे x square, m square x square I into x square plus m square x square upon x plus mx x plus I mx. तो न्यूमरेटर में x square कॉमन है which we can take it out. डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म से x बाहर ले सकते हैं, सेकेंड टर्म से भी x बाहर ले सकते हैं, तो x square बाहर आ जाएगा. So what remains? We can cancel x square and x square. X square can be taken outside from numerator, x square can be taken from denominator. These x square will get cancelled, which means that the whole limit depends upon the value of m. x कहीं पे आ ही नहीं रहा है. All the x are getting cancelled. It is depending upon m. अगर मैंने y को x लिया, मतलब when m is equal to 1,
you will get different value. When m is equal to 2, you will get another value. So as the value of m will change, the value of f dash of 0 will also change, which means that f dash of 0 is not unique, which means that f dash of 0 does not exist or the function is not differentiable. ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स इसके लिए लिया है कि एक ही कर्व में प्रूव हो जाता है. यू कैन टेक टू डिफरेंट कर्व्स, पैराबोला ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, कैसे भी ले सकते हैं. तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे कि एफ डैश ऑफ 0 जो है दो अलग अलग वैल्यूज आती हैं, वो हमको प्रूव करना है. दैट इज ओनली द प्रूफ विच हैज टू बी डन. तो सिंपल के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स इज ऑलवेज बेटर, which depends on m. So as m value changes, the value of f dash of 0 will also change. तो same value अगर आता है तो ही differentiable होता है, otherwise the function is not differentiable. f dash of 0 does not exist. So the function is not analytic. ठीक है, थोड़ा सा है confusing, I do understand. तो पहले हमें निकालना है ux, uy, vx, vy by using the first principle, and then calculating f dash of z by the normal derivative method. And then since यहाँ पे x और y दो variables हैं, so what we will do is, and this condition is very important, z has to tend to 0 along any path, the value of f dash of 0 should be the same. हमने वहाँ पे prove किया था x tending to यहाँ पे मतलब 1 minus 2, this minus upper, what is that, right hand limit, left hand limit, we had done all this in continuity also. वही कॉन्सेप्ट इज एक्सटेंडेड टू यहाँ पे. कैसे एक ही कर्व नहीं रहेगा, बिकॉज z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो एक कर्व आ जाएगा. वहां पे ऑलवेज x टेंड्स टू आता था, दैट वाज ऑलवेज अलोंग द रियल एक्सिस. यहाँ पे इट विल बी अलोंग एनी कर्व. y इज इक्वल टू mx. Special typical type of problems where the CR equations are satisfied at z equal to 0, but the function is not analytic. Okay, so if we do one more problem, it will be clear. Okay, thoda confusing, I do understand. Till last year's portion, this part was not included in the syllabus, but this year they have included this part also in the syllabus. So you can expect one question from this type. I didn't understand when we have to take. See, f of, okay, I'll go to the next part, I'll explain that part. Okay, yes, I'll go to the next problem and explain that part again. See, f of x comma y plus h. y plus h जब लेंगे तो हम differentiate करेंगे y से. अगर x plus h लेना है तो हम differentiate करेंगे x से, उतना ही difference है. अगर हम function को y से differentiate करेंगे तो y plus h आ जाएगा. x will remain as it is. और अगर हम फंक्शन को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस h आ जाएगा. अगर हमको ux निकालना है तो हम x प्लस h करेंगे. uy निकालना है तो x कॉमा y प्लस h करेंगे. दैट इज ओनली द डिफरेंस. क्लियर नाउ? यस. Still, I'll take the next problem. It will be more clear. Same type of function. या एक्सप्लेन करते एग्जाम्पल से करती हूँ. जो भी वेरिएबल से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें हमें x प्लस h हम नॉर्मली डिफरेंशिएट करते. वी हैव नॉट अप्लाइड एनी टाइम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. फर्स्ट प्रिंसिपल ने कभी अप्लाई नहीं किया इन डिफरेंशिएटिंग. ओके, दैट वी हैड डन इन अर्लियर, एंड देन दे हैव फाउंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x as cos x is minus sin x, and then we're just using those derivatives. Okay. Okay. The first next example, f of z is xy into y minus ix upon x square plus y square, z not equal to 0, f of 0 equal to 0. Same type, it's not analytic. Even the CR equations are satisfied at z equal to 0. ठीक है. अभी अगेन फंक्शन इज डिफाइंड इन टू इंटरवल्स. एक कब है z नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड वन व्हेन z इक्वल, f ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, z की वैल्यू 0 है.
So when z is not equal to 0, we have this as f of z, and when z equal to 0, f of z equal to 0. Okay, दो functions यहाँ पे दिए हैं. हमें प्रूव करना है कि CR equations are satisfied at z equal to 0 and the function is not differentiable. Okay, तो सबसे पहले okay, अगर z 0 है यहाँ पे, तो what are the values of u and v? 0 है ना. अगर यहाँ पे z, अगर मैंने f of z को f of z is u plus iv, तो अगर f of z 0 है तो u 0 है, v 0. दैट इज द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमें u और v निकालना है. तो अगेन f of z को हम u plus iv पुट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में. यहाँ पे ऑलरेडी 0, इसके u और v अलग से लिख नहीं रहे हम लोग. ओनली वी आर कैलकुलेटिंग u and v फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन. इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है. Open the bracket, xy square minus ix square y upon x square plus y square. Equating real and imaginary part, we'll get u is equal to xy square upon x square plus y square, and v is equal to minus x square y upon x square plus y square. यहाँ तक क्लियर है सबको? पहले क्या करना है? ठीक है, दो फंक्शंस में फंक्शन डिफाइंड है, तो दोनों फंक्शन में से हमें u और v निकालना है. पहले फंक्शन को हमने लिया तो हमें u और v निकल गया when z is not equal to 0, और सेकेंड फंक्शन जो दिया f of 0 equal to 0 में u की वैल्यू भी 0 है, v की वैल्यू भी 0 है. When a complex number is equal to 0, we'll say the real part is 0, imaginary part is 0. तो in the second function u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 0 है when x and y are 0. ठीक है, तो ये हो गया दो पार्ट. These are u and v when z is not equal to 0, and when z is equal to 0, u is 0, v is 0. ये पार्ट यहाँ तक हो गया. अभी हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव्स. ओके, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्यों निकालना है? बिकॉज हमें प्रूव करना है कि CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ऑरिजिन और एट z इक्वल टू 0. ये हमको प्रूव करना है. तो इसका मीनिंग क्या होता है? वी आर डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. मतलब हम लोग u को x से डिफरेंशिएट करते हैं और y को कांस्टेंट रखते हैं. सो u ऑफ x कॉमा y इज अगर फंक्शन है तो u ऑफ x कॉमा y में हमें खाली x से डिफरेंशिएट करना है. सो अगर x से डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एच. y इज अ कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल दो वेरिएबल्स के लिए है. जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल किया दैट वाज ओनली फॉर सिंगल वेरिएबल. तो y को वैसे ही रखना है, खाली x को चेंज करना है. यहाँ पे x प्लस एच आएगा, यहाँ पे x आएगा. अगर हम इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे तो x को वैसे ही रखना है और y को चेंज करना है. क्लियर नाउ? यश, if you are differentiating u partially with respect to x, now since u is a function of x and y, हम अगर x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y will remain as a constant. इसीलिए y को वैसे का वैसे ही रखा है हमने, और u x को हमने x प्लस एच और x रखा है. ठीक है, अभी हमें कहाँ पे निकालना है CR इक्वेशंस? एट z इक्वल टू 0. मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 में निकालना है. तो when x is 0, y equal to 0, what will happen to this limit? तो ये हो जाएगा u of 0 plus h, that is h. x को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है. तो ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा 0, x को 0, y को 0 अपॉन h. ये पूरे फंक्शन में हमें x को 0 पुट करना है. Why this is required? Because we are asked to show that the function satisfies the CR equations at z equal to 0. z equal to 0 का मतलब होता है x equal to 0 and y equal to 0. ओके, अभी हमें यहाँ पे हमारे पास दो u थे. एक u कौन सा था? when z is not equal to 0, and the second u was when z equal to 0. when z equal to 0, u की वैल्यू 0 होती थी, and when z is not equal to 0, we got this as the u function from the first function. Okay, तो ये फंक्शन में हमें x को h पुट करना है, y को 0 पुट करना है. यहाँ पे हमें x को h पुट करना है, y को 0 पुट करना है. What will happen?
पूरे फंक्शन में अगर मैंने x को h पुट किया, y को 0 पुट किया, तो क्या हो जाएगा ये वाला फंक्शन? क्या आएगा आंसर? 0। करेक्ट, 0 हो जाएगा बिकॉज इट्स मल्टीप्लाइड बाय y, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये वाला u हमने कहां से लिया है? व्हेन z इज नॉट इक्वल, द फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन डिफाइन था। अभी हमें ये u कहां से लेना है? फ्रॉम द सेकेंड इंटरवल। सेकेंड इंटरवल क्या था? f ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब व्हेन z इज इक्वल टू 0, व्हाट इज दैट, x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है? इसकी वैल्यू 0, दिस वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम दिस u, and this 0 we are calculating from the second interval. This is calculated from the first interval, this is calculated from the second interval. तो ये 0 अपॉन h इक्वल टू 0, तो पूरा ux इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली uy लिखना है, डो u बाय डो y। जस्ट ट्राई करो लिख के, हाउ टू राइट डो u बाय डो y। You are differentiate, u is always a function of x and y. Do u by do y, मतलब हमें u को y से डिफरेंशिएट करना है, keeping x as a constant. तो x वैसे का वैसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा y plus h, और यहाँ पे y. Again at the point z equal to 0, और at the point x equal to 0 and y equal to 0. फिर से यहाँ पे 0 पुट करना है, यहाँ पे y को 0 पुट करना है पूरे फंक्शन में। We will get dou u by dou y, or uy is equal to 0, h minus 0, 0 upon h. फिर से हमें u फंक्शन, दो u के फंक्शन दिए हैं, ये वाला u हमें यूज करना है फर्स्ट इंटरवल में से, और ये वाला u की जो वैल्यू हमको यूज करनी है सेकेंड इंटरवल में से यूज करनी है। तो फर्स्ट इंटरवल में u की वैल्यू ये थी, तो व्हाट इज व्हेन x is 0, y is h, again it becomes 0 because it's a product function. तो ये 0 हो गया, and from the second interval u is already equal to 0, फिर से 0 minus 0 upon h, that is equal to 0. That is equal to 0. तो uy is equal to 0. ठीक है, अभी आ रहा है समय थोड़ा एटलीस्ट। मीन्स जिसके साथ डिफरेंशिएट करना है उसके साथ h को ऐड करना है। यस, वेरी गुड, करेक्ट, उतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अगर हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के बदले x प्लस h लिखना है, अगर y से कर रहे हैं तो y के बदले y प्लस h लिखना है यहाँ पे। लेकिन बाकी जो वेरिएबल उसको वैसे का वैसे भी रखना है, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर हम y से कर रहे हैं तो x वैसे का वैसे लिखना है, खाली y को चेंज करना है। ठीक है, यस, यू आर राइट यश, करेक्ट। सेकेंड पार्ट हमें क्या याद रखना है? ये जो u है वो फर्स्ट इंटरवल में से लेना है, और ये जो u है वो सेकेंड इंटरवल में से लेना है, इतना ध्यान देना है। इन ए सिमिलर वे कैलकुलेट vx एंड vy, dou v by dou x and dou v by dou y. Similarly calculating dou v by dou x, v को हमें x से डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। तो y का टर्म वैसे ही रहेगा, x को हमें लिखना है x प्लस h। दो v बाई डो x हमको निकालना है z इक्वल टू 0 में। CR इक्वेशंस जो है वो z इक्वल टू 0 में प्रूव करना है। दैट इज व्हाई वी हैव टू पुट, सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, व्हाट विल हैपन टू दिस फंक्शन? अगेन हमें पूरे फंक्शन में x को 0 पुट करना है, y को 0, तो यहाँ पे आ जाएगा v ऑफ h, 0 माइनस v ऑफ 0, 0 अपॉन h। अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो v क्या हो जाएगा? व्हेन x इज h, y इज 0, फिर से 0 ही हो जाएगा, बिकॉज any one variable is 0, the whole answer becomes 0. See, that is why अगर हमें v of 0, 0 यहाँ से निकालना है तो it is not defined, correct? अगर हमें v of 0, 0 निकालना है, मतलब when x is 0, y is 0, we will get 0 by 0 form. It is not defined only in the first interval.
इसीलिए हम लोग सेकेंड इंटरवल में से v निकाल रहे हैं. So v of 0 comma 0 is also 0. So 0 minus 0 is 0. Vx is 0. Similarly, Vy. X comma y plus h minus v of x comma y. Again, हम differentiate y से कर रहे हैं, तो y plus h and y. X is remaining as a constant. Whatever is the variable, there we have to write y plus h. The other variable has to be kept as constant. Again, at x equal to 0, y equal to 0. This is again, we have to show the CR equations at z equal to 0. तो हो जाएगा 0 कॉमा h माइनस 0 कॉमा 0 अपॉन h. फिर से अगर मैंने x को 0 पुट किया, y को h पुट किया, अगेन उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो vy is also equal to 0. So we got all the differential partial derivatives equal to 0. ux, uy, vx, vy, everything is becoming 0 here. ठीक है, which means the CR equations are satisfied. हर एक की वैल्यू 0 है, तो ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. तो पहला पार्ट हो गया कि CR equations are satisfied at z equal to 0. नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? f dash of 0 does not exist. हमें प्रूव करना है कि f dash of 0 does not exist. So we have to write the definition for f dash of z. Hope this partial derivative, this part is clear. First part जो है उसका. ठीक है. The second one, f dash of CR equations are satisfied, hence the function is the CR equations are satisfied. Now calculating f dash. We have to show that the function is not analytic at z equal to 0. तो f dash of 0 निकालना है हमको. तो z नॉट के बदले 0 आ जाएगा यहाँ पे. नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब होगा कि ये लिमिट जो है वो यूनिक वैल्यू नहीं आती है. To prove that this function is not differentiable, we have to show that the value of this limit is not unique. Okay, as z approaches 0 along any path. फिर से फंक्शंस f of z पुट करना है, f of 0 पुट करना है और z को x plus i y पुट करना है. f of z is the given function. f of 0 भी दिया हुआ था प्रॉब्लम में. We are replacing all these functions. f of z when z is not equal to 0, f of 0 is 0 and z is x plus i. We can simplify further. Take this term in the denominator. Again, we will put y is equal to m. That is the simplest curve which we can simplify. Put y is equal to mx. It's not a compulsion that you have to put y equal to mx. Any curve you put, you show that two different values are there. But this simple one, because y is equal to mx always, it's better. एक ही curve में हो जाता है वो. नहीं तो you have to take two different curves and show that the values of f dash of 0 are different. So putting y is equal to mx. तो पूरे फंक्शन में जहां पर भी y है, y के बदले mx, मतलब पूरा फंक्शन जो है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लिमिट ऑल्सो विल कन्वर्ट टू x टेंडिंग टू 0. पूरे फंक्शन में y के बदले mx पुट करना है. Simplify and check whether x terms are getting cancelled. क्योंकि लिमिट जो है वो x का है. देखो whether the x terms are getting cancelled when we simplify these terms. कैंसिल होता है x स्क्वायर पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. खाली m का फंक्शन बचता है क्या पूरे फंक्शन में? अगर if I take what is common x cube is common in both numerator and denominator.
I can write this as m square x cube minus im x cube. This is x square and this is x. तो यहाँ से x cube बाहर आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म में से x square बाहर आएगा, यहाँ से x बाहर आ जाएगा. तो we can take full x cube common. This x cube and this x cube gets cancelled. तो लिमिट पुट करने कुछ x बचा ही नहीं हमारे यहाँ पे, तो खाली m का फंक्शन बचता है. This is going to be your answer. But as the value of m will change, the value of f dash of 0 will also change. अगर m को हम 1 पुट करेंगे तो f dash of 0 अलग वैल्यू होगी. अगर m को 2 पुट करेंगे तो we'll get different value for f dash of 0. So for different which depend, this whole limit depends upon m. So as the value of m will change, the value of f dash of 0 will also change, which means that we are not getting a unique value for this limit, which means that the function is not analytic. Okay, so this depends upon m. Hence, f dash of 0 does not exist. Because why does not exist? क्योंकि जितने अगर m को हम different values देंगे तो f dash of 0 भी different values आएंगे. We are not getting a single value for that. That is why the function is not analytic. The basic concept we have used of derivative here. Maybe one more we can take of the same type. Hope little bit went into your, I don't know how much you have understood. That's why I took this problem in the last, because I don't want to confuse you with the other topics. The separate typical problems here. The next problem, same type, function is different. x cube कैंसिल होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x cube कैंसिल हो जाता है. यहाँ पे भी x cube है, यहाँ पे भी x cube है, यहाँ पे भी x cube है, यहाँ पे भी x, दोनों कैंसिल होके इसलिए लिमिट की वैल्यू जो खाली m में डिपेंड करती है. Okay. नहीं तो आंसर 0 है. अगर x अगर बचता है लिमिट के अंदर तो फिर x को 0 पुट करना है, हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है ना. तो x क्यूब कैंसिल होता है करके वो एक m का फंक्शन बचता है पूरे फंक्शन, पूरे f dash of 0 में. Now prove that f of z is equal to root of mod of xy is not analytic at the origin, although CR equations are satisfied at that point. Again, origin का मतलब है z equal to 0. X equal to 0, y equal to 0, that is the origin. Even though here function is not defined in intervals, we can make use of the same definition. So what is u, what is v here? F of z is u plus iv. So what is v in this case? There is no imaginary part of this, there is only real part given in the function, है ना. u अगर f of z को u plus iv पुट किया तो यहाँ पे कुछ imaginary part है ही नहीं. मतलब क्या है, खाली u is equal to this and v equal to 0. Okay, u equal to root of mod of x comma xy and v is equal to 0. So I can write u is equal to root of mod xy and v equal to 0. Now when v equal to 0, vx is 0, vy is 0. Now ux. Now since we are having root of mod, again we will apply the same first principle method. Okay.
we will apply the first principle method again to calculate ux and uy. तो कैसे लिखना है ux को हमें? Same formula, limit h tending to 0, u of x plus h comma y minus u of x comma y upon h. This is much simpler in differentiating because we are having root of 1 mod of xy. So I'm going to make use of the same first principle method to calculate the derivative. Again, at x equal to 0, y equal to 0, we will have u of h comma 0 minus u of 0 comma 0 upon h. What is the value of u of h comma 0? U is this function. What is the value of u of h comma 0? 0 ही होगा because यहाँ पे दोनों 0 है. And what is the value of u of 0 comma 0? यहाँ पे एक ही function u है, दो function है ही नहीं यहाँ पे, तो दोनों u हमको यहाँ से निकालना है. ठीक है, तो u of h comma 0 is also 0, u of 0 comma 0 is also 0. तो पूरा function 0 हो जाता है. That is equal to 0 minus 0 upon h, that is equal to 0. है ना? यहाँ पे दो function u के है ही नहीं, एक ही function में defined है function. तो u is equal to root of mod xy. तो u of h comma 0 यहाँ से निकालना है, u of 0 comma 0 भी यहीं से निकालना है. प्रीवियस में क्या था? द फंक्शन वॉज नॉट डिफाइंड फॉर z इक्वल टू 0, फर्स्ट वन. इसके लिए हम लोग सेकेंड इंटरवल से ले रहे थे. सिमिलरली कैलकुलेट uy, सेम वे uy करना है हमको. uy का डेफिनेशन लिखना है, x को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है, एंड देन सब्स्टिट्यूट दैट इन द u फंक्शन. क्या आता है देखो आंसर. What is the value of uy? u is root of mod xy. अगर मैंने x को 0 पुट किया, y को h पुट किया, अगेन 0 ही आएगा. u of 0 comma 0 is also equal to 0. So we get uy equal to 0. And since v is 0, vx and vy are also equal to 0. Okay, so which means that ux is 0, uy is 0, vx is 0, vy is 0. The CR equations are satisfied. I'm sorry, this is ux is equal to vy, not minus vy. Let's change this minus sign. मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये minus sign यहाँ पे आना चाहिए. ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता because everything is 0, but still the CR equations are not right. Let's change this to plus vy. This is plus, this is minus. X is equal to vy and uy is equal to minus vx. Okay. The CR equations are satisfied at z equal to 0. Similarly, prove that f dash of 0. सेम जो हमने लास्ट प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स में किए, वैसे ही करना है यहाँ पे भी. f dash of 0 is limit z tending to 0, f of z minus f of 0 upon z minus 0. Substituting for f of z, f of 0 क्या होगा? f of z is mod xy. इसमें अगर मैंने x और y को 0 पुट किया तो f of when z को 0 put, the whole function will become 0. Mod xy minus 0 upon x plus y, x plus y. Put y is equal to mx. See whether the whole function is depending on m. Simplify करना है.
y को हमें mx पुट करना है पूरे पूरे फंक्शन में, तो x into mx and then x plus I into mx. Now here we will get mx square or x square m. So when it comes out of the mod, you will get x square, and when it comes out of the root, x will come out. Denominator में से भी x बाहर आ जाएगा. Okay, here we are having x square. X square, when you take out of the mod, it's going to be a positive number only. So mod x square is equal to x square, and under root से बाहर निकाला तो x हो जाएगा. तो यहाँ से x बाहर आएगा, यहाँ से x बाहर आ जाएगा. That x will get cancelled. तो बचेगा root of mod m upon 1 plus I m. x बाहर निकाला यहाँ से मैंने, और ये x और ये x कैंसिल करके रूट ऑफ मॉड m अपॉन 1 प्लस आई एम. This value depends on m. As m changes, the value of f dash of 0 will also change, which means that the function is not differentiable. And if the function is not differentiable, we can say the function is not analytic also. F dash of 0 does not exist. और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा है कि f dash of 0 is not analytic. तो अगर सपोज यहाँ पे अगर इसका एक वैल्यू अगर आ भी गया, तो देन यू हैव टू ट्राई विद डिफरेंट कर्व. ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा यहाँ पे f dash of 0 does not exist प्रूव करने के लिए. Two different curves you have to take and show that the value is not equal to not same. यहाँ पे कैसे अगर m बचता है तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है x कैंसिल नहीं होता है, तो फिर क्या होगा जब x को 0 पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा. Okay, then take some other curve and show that the value is different. Same type, one more. It's almost time, so you can try this as homework also. F of z is equal to, I'll send the PPT, you can just go through that. यहाँ पे अगेन फंक्शन इज डिफाइंड इन टू डिफरेंट इंटरवल्स. u लिखना है, v लिखना है, ux निकालना है, uy निकालना है, एवरीथिंग इज द सेम. So with that, complex module is over. We'll be starting with Fourier series from tomorrow. U and V. Let's try this problem at home. In the evening, you can try this. When I'll send the PPT. Before that, you just try this and then see whether you're getting the answers or not. इतना याद रखना है, अगर y is equal to mx में अगर m नहीं आता आंसर में, तो then you have to try with different curve. ये प्रॉब्लम में ऐसा करना पड़ेगा. यहाँ पे when you have this ना CR equation satisfy हो जाते हैं. When I put y is equal to mx ना, this x is remaining in the answer. When I put in the last one, when x is when I differentiate this, अगर मैंने यहाँ पे x कैंसिल नहीं होता है, तो x अगर x को 0 पुट किया तो whole term will become 0. ओके, तो क्या करना है फिर और एक कर्व लेना है. अगर ये 0 हो जाएगा तो और एक कर्व, कोई भी दूसरा कर्व ले लो. तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर्व लिया है जैसे जिसमें से पूरा फंक्शन जो है वो व्हाट आई से एक कॉमन फंक्शन हो जाता है. और वी कैन कैंसिल x थ्रू आउट. Take the function, take the curve in such a manner that everywhere this x gets cancelled.
तो मैंने फंक्शन एक्चुअली ऐसा लिया है, y raised to 5 is equal to x cube. You can take any function. I'm telling you why I've taken y raised to 5 is equal to x cube is, अगर यहाँ पे y raised to 5 को x cube पुट किया तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा. और even if this is not becoming 6, हाँ वो भी 6 ही हो जाएगा. It is only for that purpose we have taken y raised to 5 is equal to x cube. Because जब हम y equal to mx पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 आ रहा है. तो now you have to take some other curve and show that you're getting a different value. तो मैंने ऐसा कर्व लिया है जिससे कि पूरा x raised to 6 कैंसिल हो जाए. We will get the answer as 1 by 2. So again, two different values. We will get the answer. The function is not unique. Okay, ऐसा प्रूफ किया है मैंने. तो ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग. Okay. Try the remaining part. Okay, so we'll wind up for today. See you in tomorrow with Fourier series. Thank you.